हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। Now continuing to do chapter 12. Name of the chapter is Devotional Service, Bhakti Yoga. So till now, Krishna has taken us through a journey of Bhakti Yoga, is introduced to us Bhakti Yoga and compared it to other yogas. कृष्ण अब तक हमें भक्ति योगा के पथ का अवलोकन कराया है और भक्ति योगा को अन्य और योगों से तुलना किया है. And then in the last sloka, we learned how the highest form of all yogas is Bhakti Yoga, the pure devotional service where devotee thinks of Krishna in his mind and he uses his intelligence for Krishna. And that we learnt as, that is how, that is Krishna life. तो ये कृष्णा लाइफ है, ये हमने समझा, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ. So today, Krishna is going to tell us what characteristics within us, if we have, we will become very dear to Krishna. अगर हम कृष्ण का प्रिय बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या ऐसे गुण होना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं. कृष्ण खुद अभी for the next 7-8 slokas he'll go on enumerating what are the qualities that he wants his devotees to have, and if his devotees have these qualities, they become very dear to him. तो कृष्ण हमें एक ऐसे जर्नी पे लेके जाने वाले हैं नेक्स्ट 8 श्लोकास, जहां पे वो इन्यूमरेट करने वाले हैं क्या ऐसे गुण हैं जिसको भक्त अगर अपने जीवन में उसको लेके आएगा या डेवलप करेगा उस बिहेवियर को, he becomes very dear to Krishna. तो कृष्ण का प्रिय बन जाता है. So we are all wanting we are all doing all these things, whatever bhakti you are doing. Why? Because in order to achieve the desired success. क्या है सक्सेस? मानव जन्म का जो सक्सेस है क्या है? कृष्ण प्रेम. To attain Krishna prema, to become beloved of Krishna, and to get love of Krishna within our heart. हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम को जागृत करना और कृष्ण को हमारे प्रति आकर्षण करना. To become beloved devotees of Krishna. कृष्ण का प्रिय होना. How we can become? Krishna is now telling us how we can become his dear devotees, how we can become dear to him. So, ready to go through this journey? What are the characteristics? Adveshta Sarva Bhutanam. Just let me project the shloka. So, shloka number 13. 13 and 14 are combined. Adveshta Sarva Bhutanam Maitra Karunaye Vacha निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः. My devotee, this is my devotee. One who has these characteristics is my devotee. Yo madbhakta. Or we can say, if my devotee has these qualities, Same Priyaha, he becomes very dear to me.
तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब करीब हो जाते हैं। मैं उनका मैं उनका मैं उनके अंदर प्रेम को जागरूक कर सकूंगा, और मैं उनसे प्रेम करूंगा। किन से प्रेम करेंगे? जो भक्त ये सारे गुण रखते हैं। क्या गुण रखते हैं? अद्वेष्टा, वन इज नॉट एनवियस, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं है। देन, और सर्वभूताना, कोई भी जीव के ऊपर ईर्ष्या नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूताना। देन, मैत्र इज वेरी फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। हर हर जीव का वो मित्र होता है। मित्र ये नहीं है कि जाके गले लगाना। टू विश गुड फॉर अदर्स, मैत्र। करुणा ये वचा, एंड ऑल्सो वन हु इज वेरी काइंड, जो करुणा भाव रखता है। फिर निर्ममः, व्हाट इज निर्ममः? विद नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेरा मेरा मेरा, ऐसा जो भक्त कहेगा कृष्ण उसको मतलब प्रिफर नहीं करते उनको, मतलब उनको वैसे भक्त अच्छा नहीं लगते, और ऐसे बोलने वाले भक्त भी नहीं। तो वन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मी मी माइन माइन, कृष्ण डजंट लाइक। निरहंकार, तो निरहंकार विदाउट फॉल्स ईगो, मेरे से ही, मुझसे ही सब हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति को कृष्णा पसंद नहीं करते। वन हु सम दुख सुख क्षमी, one who looks upon happiness and distress on an equal platform. Shami. So what is Shami? One who is forgiving, जो सबको क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे भक्त समे प्रिय। आगे, संतुष्ट सततम योगी। तो संतुष्ट सततम, ऑलवेज सेटिस्फाइड योगी, मेरे मेरे ऊपर अपना मन को लगा के जो रहा है, that is yogi. One whose mind is fixed on me. Yogi means union of soul and super soul. So the fixation of mind on Krishna means they are becoming yogi. Satatam yogi. Santushta satatam. It's such a beautiful language. Sanskrit is, satatam is the between word. Santushta satatam. Always happy. Satatam yogi. Always in union with me. Then, यथात्मा दृढ़ निश्चय, तो वन हु इज एंडेवरिंग विद डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय से भक्ति के पथ पे चल रहा है। देन, मई अर्पिता मना बुद्धि, व्हाट हैज ही प्रीवियसली सेड? टॉप मोस्ट भक्ति योगा इज मयावेश मनो ये मान। देन इज ऑल्सो टेलिंग बुद्धि निवश्यसी, मई बुद्धि निवश्यसी। What is he telling here? My arpita mano buddhir. One who is offered his mind and intelligence to me. That means he's always thinking about me. In his heart, I'm always there. Yomat bhakta same priyaha. Here is the secret of becoming dear to Krishna. What is the secret? One who is not envious, adveshta. One who is a kind friend to all living entities. Sarva bhutanam maitraha. Then, who does not think of himself as a proprietor, nirmamaha. Then who is free from false ego, nirahankaraha. Who is equal both in happiness and distress, sama dukkha sukha. दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण ने क्या बोला है? सो कृष्ण इज टेलिंग, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिन अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। One of the first few instructions Krishna gives Arjuna is become tolerant. Don't be bothered, don't be disturbed by all these things. Sukha, dukkha, then the heat and cold, the honor, dishonor, somebody is telling good, somebody is telling bad about you. Don't get disturbed. That is the first rule of becoming a devotee. That is the first stage where we should start off. And the topmost stage is when we become परफेक्ट इन दैट। परिपूर्ण जब हो जाएंगे हम इन सारे गुणों में, तब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। सो देन ही सेज, हु इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, संतुष्ट सततम, एंड एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। योगी,
यथा आत्मा दृढ़ निश्चय, with great determination is doing a service, satatam, always, whose mind and intelligence are in agreement with me. So in me means in agreement with me. मैंने जो उपदेश दिया है वो उसको मानते हैं और उस पथ पे चलते हैं. मई अर्पिता मनोबुद्धि. This is a secret of Krishna consciousness, to be successful in Krishna consciousness. Mai arpita mano buddhir. Offer your mind and intelligence to Krishna. Offer everything you have in the service of Krishna. What happens then? He is very dear to me. Yomat bhakta same priyaha. So further slokas he will go on telling. So let's try to understand this sloka. Prabhupada says, coming again to the point of devotional service, Krishna also is coming back to the point of devotional service. And Prabhupada is again and again coming back to devotional service in his purpose. The Lord is describing transcendental qualities of a pure devotee in these two verses. एक शुद्ध भक्त के क्या गुण होना चाहिए जिसके कृष्ण अपना प्रेम उसको दे सकेंगे. Not only will we become Krishna premi, Krishna also will become our premi. He will love us when we have these qualities that are mentioned in these two verses. So a pure devotee is never disturbed in any circumstance. कोई भी संदर्भ में वो विचलित नहीं होता. ये शुद्ध भक्त है. So अभी हमें पता चल गया कितने पानी में हम उतरे हैं, भक्ति के पथ में कितने पानी में हम उतरे हैं. ये सब हम कैरेक्टर्स जो पढ़ रहे हैं इसमें कितना परसेंटेज कैरेक्टर्स है हमारे अंदर. How many percentage of these characters we have, and in those characters how much percentage of those characters we have. कितने मात्र में हमें हमारे अंदर वो गुण है, वो कैरेक्टर है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, है ना. वेरी इजी टू टॉक अबाउट अदर्स, बट a devotee is always introspecting कि what am I, मेरा मतलब भक्ति जीवन कहाँ चल रहा है. That is what he is always contemplating on. So further, he thinks that one is acting as his enemy due to his own past misdeeds. अगर कोई ईर्ष्या भावा दिखाते हैं उसके ऊपर, jealousy, if somebody is showing jealousy on a devotee, he will think actually it is not that person's fault, it is all my fault. मेरे पूर्व कर्म ऐसे हैं इसीलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है. ये केवल एक निमित्त है. This person is only an instrument for me to face my karma. This is how a devotee thinks. That's why he's Shami, always forgiving. Apparently the troubles are being caused by you. Apparently you are insulting me. Apparently you are jealous of me. Apparently you are talking bad about me. But actually it is not your fault. The fault lies in me. मेरे पूर्व कर्म ऐसे हैं कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है. This is how a devotee thinks. So, thus it is better to suffer than to protest. इसलिए बेहतर होगा मैं इसको तितिक्षस्वा टॉलरेट कर दूं rather than fight. क्यों ऐसे बोला आपने? Why did you do this? इसने ऐसे बोल दिया, आप इसको सबक सिखाइए, मैं इसको सबक सिखाऊंगी. सबक सीखना है हमें खुद कि क्या सबक सीखना है. दुखालयम अशाश्वतम. This material world is a place of दुखा. इस दुख में आलय में आप सुख को ढूंढ रहे, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा. अगर आप बैम्बू स्टिक में शुगर केन का जूस ढूंढ रहे, कितना भी आप चबाओ, कितने अच्छी तरह आप चबाओ, हाउ टू चू अ बैम्बू स्टिक नाइसली, कोर्स भी कर लो और अच्छी तरह आप बैम्बू स्टिक चबा भी लो, बट यू आर बाइटिंग ऑन द रॉन्ग स्टिक. आपको शुगर केन स्टिक को बाइट करना चाहिए अगर आपको स्वाद चाहिए, मिठास चाहिए. If you want sweetness, you must bite on sugar cane. By biting on bamboo stick, no matter how nicely you bite, no matter how good you are, no matter how good the bamboo stick is, all this is not going to give sweetness because it is not there. उसमें रस है ही नहीं, उसमें मिठास है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा चाहे कितना भी एफर्ट आप डालो. Similarly, in the material world, no matter how much effort you put, no matter what you do, no matter how much ever you collect,
One day you have to live it and go. So, and चाहे जितना भी आप बटोरो जिंदगी में, कमी हमेशा लगेगा। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना और मिल जाए, कभी आदमी संतुष्ट नहीं होगा। मेटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म में, मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट में कभी संतुष्ट नहीं होगा। आज आपने 1 करोड़ पा लिया, नेबर को 2 करोड़ को लॉटरी लग गया, देन वी आर थिंकिंग अबाउट 3 करोड़, कैसे मैं 3 करोड़ बनाऊं। सो सच ए पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी, who is always looking at others and determining his happiness. So who is a yogi? Satatam, who is always happy, santushtaha. If we are always had, we are always bothered about what others say, we are always thinking that my life is like this because of others, is not at all a quality of a devotee. A devotee does not complain. Now, Prabhu, are you trying to say that if somebody is trying to do harm for me, I must keep quiet? Not to take defensive action and to get affected by the act of others are two different things. We must not get affected mentally by the acts of other people, but we must have enough defenses to prevent that person from doing any harm to us. सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, दुखी होके नहीं, ये समझ के कि इस भौतिक जगत में तो ये होना ही है, भौतिक जगत में मैं हूं, पहला गलती मेरा है। भौतिक जगत में मैं क्यों हूं? मेरे गुण और कर्म की वजह से, बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ माई कर्मा, आई एम स्टिल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मच्छर इन्फेस्टेड एरिया में जाके मैं बोल रहा हूँ मच्छर काट रहे, मच्छर काट रहे। अरे भैया, आप गए हैं ऐसे एरिया, यू गॉन इनटू एन एरिया व्हिच इज फुल्ली इन्फेस्टेड बाय मस्किटोज, गेट आउट, गो आउट ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस। चाहे कितना भी मच्छर मारो आप, ये कॉइल जला दो, वो कॉइल जला दो, ये इलेक्ट्रिक बैट रख दो, मरते जाएंगे, लेकिन पैदा भी तो हो रहा है, क्योंकि उस जगह पे इट इज सुटेबल फॉर द मस्किटो टू ग्रो। सो यू मस्ट गो आउट ऑफ दैट प्लेस। सो वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड वी आर कंप्लेनिंग, ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं, मेरे लिए केवल दुख आ रहा है, इन्होंने मुझे दुख दे दिया। अरे, आपको दुख ही आएगा इन द मटेरियल वर्ल्ड। देयर इज नो सुखा इन द मटेरियल वर्ल्ड, द सुखा इज ऑल्सो टेम्पररी, इट इज माया देवी ट्रिक। आगे कैरेट डैंगल करके आपको लेके जा रही है आगे। सारे जो भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं उनका यही हाल है। करोड़ों करोड़ों कमा लिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बीवियां रख लिया, एक घर वाली, दो बाहर वाली, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग थिंग्स एंड विथ मेटेरियलिस्टिक पीपल। कभी नहीं आएगा। There's only one place which can give us full happiness, lotus feet of Krishna. And that lotus feet of Krishna we can achieve by surrendering to the lotus feet of spiritual master. The secret of success, secret of being eternally happy is to surrender to the lotus feet of your spiritual master, Srila Prabhupada. Follow his instruction, so that one day you will attain the shelter of Krishna, which is where you can be Santushta Satatam. That's the formula. There's no other way we can have it. भूल जाइए, आपका जो भी फॉर्मूला है, 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, इतना कमाएंगे, इतना सेविंग्स करेंगे, इसमें इसमें इतना होगा, फिर इंश्योरेंस करेंगे, all this now is not going to keep you happy. It may keep you materially, comfy, but that is not guarantee for happiness. And material comfort is also not guaranteed. कभी भी कुछ भी हो सकता है। 3 साल पहले क्या हुआ था? किसी ने सोचा था? क्या आया था? महामारी, कोविड। अच्छों की पतलून गीला हो गया। People's state became so bad. People committed suicide. With all due respects to them, people became mad, crazy. People gave up materialistic life, and many people came to Vrindavan. They went to holy cities and settled down, saying that many IIT graduates, many big professionals gave up their profession and started coming to the village and purchased a farmland and started doing farming, agriculture. And many people became spiritually inclined.
जब संकट आएगा, वेंकट रमणा का याद तो आएगा, तभी याद आएगा। इसलिए दुखालय अशाश्वतम इज डिजाइन लाइक दैट टू गिव यू दुखा, सो डू रिमेम्बर कृष्णा, यू रिमेम्बर दैट दिस इज नॉट योर प्लेस, आपका घर कहीं और है, आप यहाँ पे आ गए हो घूमते भटकते, आपको वापस जाना है कृष्णा के घर, विच इज योर ओन, विच इज योर ओन हाउस। So in the Srimad Bhagavatam it is stated Tatya Anukampam Susamikshamano. So what does it mean? Whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is the Lord's mercy upon him. दुख आ रहा है जिंदगी में, भक्त ये सोच रहा है ये तो भगवान की कृपा है, क्योंकि दुख आने के बाद मैं भगवान को याद करूंगा, केवल सुख ही आएगा मेरी जिंदगी में, मैं भगवान को भूल जाऊंगा। सुख एक विष है, भौतिक सुख एक विष है। क्यों? क्योंकि हमें वो हमको भगवान से दूर लेके जाएगा। बस निरहंकार होना है, अहंकारी बन जाएंगे, मेरे बलबूते पे देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर लिया, मुझे ये जॉब मिल गया, मुझे ये स्टेटस मिल गया। सो मुझे मिल गया, मेरे एफर्ट से मिल गया। वेयर इज गॉड देयर? God is not there. So God has taken a back seat. So we'll go fast ahead in the material life only to meet with great accidents. So the path of material road, the road of material success is filled with great obstacles and accidents. This is not pessimism. This is realism. प्रभु आप तो निराशावादी हो गए, ये निराशावादी नहीं है, ये रियलिस्टिक है। Because whatever you do, one day you will die. तो आपके शायद बच्चे इसका मतलब फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा उठा नहीं पाएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं आप, क्या हम थोड़ा सुख का अपेक्षा नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज वी आर आवर डिफॉल्ट, आवर टेंडेंसी इज आनंदमय। वी मस्ट ऑलवेज सीक हैप्पीनेस, वी मस्ट सीक प्लेजर, बट वी मस्ट नो वेयर द रियल प्लेजर इज। बैम्बू स्टिक चू करके अगर आपको प्लेजर आ रहा है, इट इज लाइक ए कैमल चूइंग थॉर्न्स। जब ऊंट जो कांटा है उसको खाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, उसको वो सोच रहा है कि कांटा बहुत स्वादिष्ट है। तो कैमल इज थिंकिंग द थॉर्न इज वेरी टेस्टी, लेकिन वो मूड प्राणी ये नहीं समझ पा रहा है, वो कांटा उसको जीभ को काट रहा है और जीभ से खून निकल रहा है, और जो स्वाद उसको मिल रहा है उसी का खून है। तो उसका खून खुद वो चूस के वो उसको स्वाद लग रहा है। सो मटेरियल हैप्पीनेस इज लाइक दैट, अपना खून चूस लेगा वो, काम करा के, लेकिन उसमें हमें स्वाद आ रहा है। तो इट इज सकिंग अवर ब्लड, बट वी आर फीलिंग हैप्पीनेस, वी आर लाइक दैट कैमल, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअली वी आर गेटिंग हार्म। So further, therefore, because of these reasons, the devotee is always calm, quiet, patient, despite many distressful conditions. क्योंकि वो जानता है, I am a devotee of Krishna. Krishna is allowing this to happen in my life. That means I deserve it. इससे ज्यादा मुझे आना चाहिए था, लेकिन मेरे भगवान, मेरे my master Krishna is so merciful on me that he is giving me only this much troubles. Otherwise, the rascal that I am, I should have had so much of troubles. Krishna is very merciful. With little trouble, he is finishing my karma. This is how a devotee will think. A devotee is always also kind to everyone, even to his enemy. It might be very difficult to swallow. कैसे अपने शत्रु पे हम दया कर सकते हैं? दया मतलब टू डू गुड। शत्रु है इसका मतलब है नहीं, ये नहीं कि आप उसका हानि ही चाहते हो। शत्रु का भी हमें हित चाहना चाहिए। We should also wish good for our enemies. What is that wish good? Not that, okay, let him do whatever he wants to me, but I will wish that, oh, let him be nice. That is not wishing good. तो आप again you are spoiling him, spoiling that person. What is really wishing good? Wishing good is to wish, to pray to the Lord. हे भगवान, यहाँ एक जीव, भूले भटके जीव, मतलब ऐसा कर रहा है भौतिक जीवन में, अपना जिंदगी को वो नरक बना रहा है,
दूसरा जिंदगी को नरक तो बना रहा है, अपने खुद का जिंदगी नरक बना रहा है। इसके ऊपर दया करना, इसके ऊपर आप भक्ति देना, और अपने शत्रु को भी भक्ति का पाठ पढ़ाना, माला जपा करो बोलना, दैट इज डूइंग रियल गुड फॉर दैट person, whoever it is. So, nirmama means that a devotee does not attach much importance to peace and trouble pertaining to the body. Sama dukkha sukha. He knows it will come and go. आज सुख आए कल दुख आएगा. We cannot escape it. Unless we have so much sukriti that we'll get lot of sukha at one point of time. But it will always be followed by dukkha. So he is tolerant, he is satisfied with whatever comes by the grace of the Supreme Lord. Santushta. मैं अपना जो ड्यूटी है मैं निभाऊंगा. I will perform my duty. Then whatever Krishna blesses me with, I'll accept it. This is how a devotee leads a life. He does not endeavor much to achieve something with great difficulty. Atyahara, ati prayasa, वो नहीं करता. Then he is always joyful. क्योंकि ये नहीं करता, because he is not distressed, he is always joyful. Therefore devotional life is सुसुकम कर्तुम अव्ययम. अगर हमें भक्ति सेवा में रुचि नहीं आ रहा है, मतलब आप सोच लीजिए कितने गिरे हुए इंसान हैं हम, that we are not able to derive pleasure by serving the Lord. That means we are highly fallen condition souls. बहुत ही मतलब नीच लोग हैं हम, अगर हमें भक्ति की सेवा में रस नहीं आना. But should I then get bogged down because of that? No. First thing is to acknowledge it. Second thing is to find the solution. What is the solution? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Chant Hare Krishna mantra and be happy. That is a formula given in the Vedas, by the purports of Srila Prabhupada. आपके गुरु आपको बार बार बोल रहे हैं, chant Hare Krishna and be happy. So if you chant Hare Krishna, you will be happy because your guru has told it. Krishna will make it happen. And the default Harinama has got that sukha because it's not different than Krishna. The pure devotee can relish chanting of the holy names of Lord. हमारे लिए क्या है? बर्डन है. 16 माला, हे बाप रे 2 घंटे लगेगा. करना है, अभी क्या करें, हमने वोट ले लिया, अभी करना है, हमें करेंगे. So our mentality is like this. At least my mentality is like this. Maybe your mentality is not like that. So we have a very long way to go, but we are on the right path. See, it is so nice to know that I'm on the right path. हाँ, दूरी है. The destination is far, but I'm on the right track. At least I will not deviate. At least someday walking, I will reach my goal. But if you are on the wrong path, चाहे कितना भी एक्सपर्ट रनर हो, स्प्रिंटर हो, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, आप गलत मतलब समुद्र में है, तो आप जो भी करेंगे आपका नुकसान ही होगा, because you will not achieve what you have to achieve. Further, he is a completely perfect mystic because he is fixed in instructions received from spiritual master. Who is that perfect mystic? जो शुद्ध भक्त कौन है? जो भक्त अपने गुरु का आदेश अक्षरशः मान रहा है. One who is accepting the instructions of his guru without any doubt and following it. See, this person is on the path of becoming a pure devotee. He might already be a pure devotee. Only a pure devotee can think like this, that I want to please my spiritual master. Because an impure devotee will always think, what can I do to please me? At best he will think, what can I do to please my family? Extension of himself. What can I do to please my community? Further extension of himself. But उसमें स्वार्थ है, क्योंकि उसमें मैं हूं. लेकिन कृष्णा चाहिए निर्ममा, निरहंकारा, ये होना चाहिए. So further, all his qualifications enable him to depend entirely on the Supreme Lord. So a devotee अपने सारे गुण को कृष्ण के ऊपर निछावर कर दिया है. He has offered everything to Krishna. So no one can disturb him. A fully Krishna conscious person is, अगर कोई हमेशा डिस्टर्ब रहता है, इन्होंने ये बोल दिया,
वो बोल दिया, इन्होंने ये कर दिया. He is not a pure devotee. He is not even a devotee. Because on the path of devotional life, a devotee will start learning that everybody is an Amsha of Krishna. I am in this material world due to my own karma. The sufferings I'm getting is because of my karma. That person is only an instrument. Fighting him is no use. I may win the battle here, but I'll lose the war. What is that war? I'll win the small battle, but because of that, some karma will come. I'll again have to remain in the material world. इस भौतिक जगत में मुझे आगे फिर रहना पड़ेगा. So I'm losing the war. तो बैटल जीत गया, war he has lost. So एक घाटे का सौदा है. So this is a losing cause. So such a standard of devotional service is undoubtedly very rare. Yes, Krishna himself is telling, Prabhupada are telling, these are all ideal characteristics. They're very rare. But it is not impossible to have it. On your own effort, it is not possible. What you should do, surrender to the spiritual master, surrender to Radha Vrindavan Chandra, chant the holy names, surrender to the holy names, surrender to Hare Krishna mantra, make it your lifeline. Chanting, make it your first and most important business in your life. Then it is possible. Otherwise, there is no other way of doing it. So a devotee becomes situated in that stage by following regulative principles. So, pehla step है sadhana bhakti, which we are all following. Then we'll go to the stage of prema bhakti, like the Goswamis. Further, the Lord says that such a devotee is very dear to him. The main thing is, when we are having these characters, we become very dear to Krishna. That is the perfection of human life. मानव जीवन का परिपूर्णता क्या है? कृष्ण का प्रेमी बन जाना, कृष्ण को प्रिय हो जाना. If we become dear to Krishna, what more we want in life? Because Krishna is everything. Everything is with us. So the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. Why is Krishna happy with such a person? Not simply because he's my devotee. It's because he's having those characters. My devotee, but I love him because he has these characters. That is why he is my devotee. You understand this? यहाँ पे कृष्णा का अहंकार मम अहंकार नहीं है. It is not materialistic. It is a spiritual, what you call ego. It is spiritual sense of proprietorship. This is my devotee. This is my devotee because he has got these characteristics which I like a lot. And because he has these characteristics, he is my devotee. So further, Krishna goes and talks, what are the other characteristics that a devotee must have so that he becomes very dear to Krishna. Yasmanodvijate loko lokanodvijate chayah harsha bhayodvegay mukto yasa chame priyaha sachame priyaha. This person is also very dear to me. One who is having these further characteristics. What is that? A devotee, for whom no one is put into difficulty. Yasman na udvijate loko. उसके कारण किसी को कोई ट्रबल नहीं हो रहा है. ऐसे भक्त सच में प्रिय, जो किसी का नुकसान नहीं चाह रहा. Then, and who is not disturbed by anxiety. लोकान न उद्विजते चाह. So he is not disturbed by what the world is doing to him, what others are doing to him. He is not disturbed. Na udvijate. Then, who is steady in happiness and distress. Again, Krishna is telling harsha, amarsha. Then, is and in fear, bhaya, udvega, anxiety, mukto. So harsha, amarsha is na udvijate, is not disturbed. Bhaya, udvega, mukta. So one who is mukta from Bhaya and Udvega. One who is mukta is free from Bhaya and Udvega. One who is free from Bhaya and Udvega is liberated. Mukto yaha. This person is going to be liberated. Sachame priyaha. Such a person is very dear to him. A few of devotees' qualifications are further being described. So what is that? No one is put into difficulty, anxiety, fear or dissatisfaction by a devotee. एक भक्त के कारण
किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा, किसी को दुख नहीं पहुंचेगा, जो किसी को दुख नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गिविंग, अदर पर्सन माइट बी थिंकिंग द अदर वे, ओ ये मेरे मुझे ये कर रहा है वो कर रहा है, बट डिवोटी नेवर वांट्स टू डू दैट. So he does not put anybody into difficulty. He does not make anybody anxious. He does not make anybody fearful, and he is not going to make anybody dissatisfied because of him. So since a devotee is kind to everyone, क्यों ऐसा नहीं करेगा? Shami, forgiving, and then he is Dayamayi. He is giving his mercy to everybody. So what was the word? Karuna. So one of the characteristics Krishna says is you must have Karuna. Then further he says, at the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. कोई उसको उद्वेग में डालने की कोशिश कर रहा है, वो उद्वेग में नहीं आएगी, because he knows Krishna is in control. My master is Krishna. Why should I be worried? ये कुछ भी नाटक करे, अगर कृष्णा नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, और अगर कृष्णा चाहेगा हो तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, मैं कैसे रोक सकूंगा? और अगर कृष्णा चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ हो, that means I deserve it, because I am his bhakta, and still he is allowing me to go through this. That means he is wanting good for me only. He is burning away my karma. Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Karma is not going to be burnt, cannot be overcome, but by bhakti bhaja it can be overcome. Bhakti my jivan say somebody can become what we can say, he can burn away all his bad karma. So further, Prabhupada says in his purport, actually because the devotee is always engrossed in Krishna consciousness, engaged in devotional service, all material circumstances cannot woo him. How to not be distracted by Maya? Maya is shadow of Krishna. When you turn away from Krishna, you will see his shadow. When you're turning towards Krishna, you will see him, you will not see his shadow. So simple. If I'm turning towards you, I will see you. If I'm turning away from you, I might be able to see your shadow. Shadow of Krishna is Maya Devi. So that means if I'm affected by Maya, I have turned away from Krishna, immediately I should become alert, and that day I must do more devotional service. So, but when he sees that others have something for their sense gratification and he has not, he is sorry and envious. That is, we're talking of a materialistic person. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear. And when he cannot successfully execute something, he becomes dejected. All these are material qualities. The devotee doesn't have these qualities. Bhaya, udvega, atank, उसके जीवन में नहीं होगा. ईर्षा, jealousy, envy, he will never have it. A devotee is always transcendental to these disturbances. Therefore, he is very dear to Krishna. Why is a devotee dear to Krishna? Not partiality. सब बोलते हैं ना partial है devotees को. Why is he partial? He's not partial because they are devotees. He's partial because they have certain features, certain characteristics, which is very dear to him. That is why they are dear to Krishna. So, our time is up. We will again meet with the Bhagavad Gita sessions next Monday. So next Monday and Tuesday, we will continue the Bhagavad Gita sessions. So from tomorrow, Wednesday onwards, Srila Prabhupada Ashray sessions will happen for each of you in your different levels. The days have been told which day your session will happen. Thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Vrindavan.